Now I'm going to share you a sample paper of science. See this paper. Any doubt you can ask. And students, it's my request that next week, my first period will be on Friday. Yes, Bhumi, I am also saying, Sheetal, you are having the list, which topic I had told to everyone, just give it to everyone. The topics from which you have to do or make a PDF or PPT, just give me that topic, Sheetal. Not only me, tell to everyone. And this is the last time, then you have to give it to me in my WhatsApp group. Okay, so now students, I'm going to share no Tanmay, I'm only having Sheetal's art integration topic. So now don't discuss on this. Now we have to move on to the sample paper. Now see students, I am going to show you a sample paper of science, not only of only physics or not only of only bio or chemistry. Yes, Tanmay, send me again in my WhatsApp number. So now students, without wasting a time, I am showing you the question of biology. Here you have a question of physics also. Here you have a question of chemistry also. Now this time the good thing for you people is कि I am showing you the question with the answer. Now you have to give or you have to write the answer in your copy and then submit the PDF to me as soon as possible. Okay, so every week you will get a sample paper from any of the three teachers. Today I am giving you the sample paper. You have to write the answers and then submit separately. Don't give all together. Submit separately to class, to your physics teacher, to your chemistry teacher, and to your bio teacher. And accordingly, you have to write the question number. Don't write by your own. कि आपके पास अगर इधर 10 questions of physics and chemistry है, तो आपने अपने हिसाब से number दिया है. Don't write like that. For example, here first question is of chemistry or biology. What do you want? Then according to this, for example, this is third question of biology. So write this number only in your answer sheet. यही number आपको answer में लिखना है. तन्मय, you will not get this in portal. In this online classes or in recorded video, you will get this. So better have a click of these questions. ठीक है? So my first question of biology is the plasma membrane is called semi-permeable. It allows the entry of selectively substances. It does not allow entry of any substances. It allows the exist of selective substances or it allows entry only. So here are the different points related to this. And the correct answer you will get in the last. In the same way, you have this fourth question, which organelle serves as a channel for transport of material between cytoplasm and nucleus? So this answer, this fourth answer I am showing you, it is in the last. Wait, let me scroll down. This is the fourth answer, only one word, endoplasmic reticulum. Now again you have a sixth question. The sixth question is
So in the same way, you have to write the question and then you have to submit your copy after completing your work in my next period. So I am not discussing the questions of 1 marks. I am moving on to the question of 3 marks and the 5 marks question. This time your paper will be of board pattern. Matlab how the 10th class paper comes, in the same way you will get the 9th class paper. So this is the question. What are the colors absorbed by a plant? You all know that what are the colors absorbed by the plant? The green light of the sunlight is blocked. And how will the photosynthesis be affected? This is the first. And the or option is, what would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? बेटा एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटी ओनली द सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये जरूरी है कि जो आपको पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। तो जैसे अभी आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इन द एनसीईआरटी बुक, बैक साइड में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। बट ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, मुझे पता है, आई नो यू नो दिस आंसर, बट द पैटर्न इज डिफरेंट। we all know that the only green color is absorbed by the plant, that's why the leaves color is green. So the green light of the sunlight is blocked, how will the photosynthesis will be affected? So this is the question number 23. Now see the answer of 23. Plant absorb all the colors in the spectrum. So we have 7 colors in the spectrum. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो प्लांट एब्जॉर्ब्स, क्योंकि सनलाइट अकेले सेपरेट करके अपनी ग्रीन लाइट नहीं देती है, तो प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स इन द स्पेक्ट्रम. The plant reflect back the green light because of which they appear green in color. तो जो रिफ्लेक्शन होता है that is only of green color. So therefore photosynthesis will not be affected if green color or green light is blocked. Okay, तो this is the answer of 3 marks. तो आपने अगर to the point answer लिखा then you will get the complete marks. और दिस आंसर इज वेरी कॉमन, यू ऑल नो कि सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से इट अलाउज द एंट्री एंड द एग्जिस्ट ऑफ द मटेरियल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन. यश यू वांट टू से समथिंग? यश कुछ पूछना है? Hello, Yash. If you want to say something, you can ask in chat. Yes, Sheetal. Ma'am, we only have to write bio questions now. हाँ. You have to write bio questions. Okay, Yash. Sheetal, I told you to give the topics of the diseases which I had given for the art integration. Or you just please tell. Don't write. Please tell. Yes, Sheetal. Sheetal. Ma'am, I'm not having that. Tanmay is having. Tanmay is having. Okay, Tanmay. Yes, Tanmay. Ma'am, he only gave me. Okay. Yes, Tanmay. I know Tanmay was the first person who has completed his this project.
of heart integration. Tanmay, Yes, ma'am. what are the different diseases I had given in your class? Ma'am, AIDS. Huh? Ma'am, AIDS, plague, hepatitis. AIDS, plague, and hepatitis. Yes, ma'am. Only Ma'am, three? one more are there. Okay. I don't remember that name. Okay. Yes, Kavya? Ma'am, corona and cancer. Corona and cancer. So, Kavya, can you write it in the chat box for everyone? Yes, ma'am. Thank you so much. So you have 4 diseases: corona, cancer, AIDS, hepatitis and plague. ठीक है, तो आपने आर्ट इंटीग्रेशन का जो प्रोजेक्ट बनाना है, यू हैव टू टेक ओनली वन टॉपिक, नॉट ऑल द टॉपिक्स। एक टॉपिक पे आपको सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम 12 to 14 इतनी स्लाइड्स होनी चाहिए। Give your introduction also. In that, you have to give your introduction, acknowledgement, and then topic. So this is the answer. Plasma membrane is the selectively membrane of that surrounds the cell and allows the entry and exit of selected material of the cell. If it ruptures, the content of the cell will come in direct contact with the surrounding medium, and not only unwanted material will be able to enter freely into the cell, but useful material will also find its way out of the cell easily. This will seriously disrupt the various metabolic activities of the cell and will result in the imminent death of a cell. So this is the question. Now just move on to the next question. And in this exam you will get the assertion and reason also. Assertion reason question, I think you all have heard earlier also. Thank you, Kavya. Krishika, enjoying your tea or coffee? So you have next question. This is 5 marks question. Describe the structure and function of different type of epithelial tissues. Draw the diagram for each type of epithelial tissue. तो मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से it's okay कृषिका, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से सारे टिश्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जस्ट वी हैव टू सी द नेक्स्ट 30। सी, इतना लिखोगे तब कहीं जाके आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अब आपको इस चीज की हैबिट होनी चाहिए कि आपने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर्स देने हैं। तो दिस इज द टाइप, पहले आपने टाइप्स लिखना है, ए स्क्वैमस, देन बी कॉलमनर एंड द क्यूबॉइडल और डी ग्लैंडुलर। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर देना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो स्क्वैमस को देखो इसने एक्सप्लेन किया है, स्क्वैमस के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। फिर उन्होंने कॉलमनर को एक्सप्लेन किया है, क्यूबॉइडल को किया, एंड देन लास्ट इज ग्लैंडुलर। तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। मार्क्स देखो और फिर आंसर दो। सिर्फ 2 लाइन में 5 मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप लोग 10th में जाने वाले हो फ्यू मंथ्स बाद, तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक अ बोर्ड स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये जो बता रही हूँ एक बार इसको देख लो। स्क्वैमस एपिथेलियम, either simple squamous epithelium or stratified squamous epithelium, means these are the types of squamous epithelium। तो आपके ऊपर है कि how you will write।
The structure and function of different types of epithelial tissues are: first is squamous epithelium, can be of two types. Simple squamous epithelium are a simple flat kind of epithelium and they are extremely thin and flat. They form a delicating lining and they are present in the lining of the blood vessels or the alveoli, where transportation of the substances occur through a selectively permeable membrane. So अगर आपको इतना लर्न नहीं हो पाता है, वैसे तो आपको इतना लर्न करना पड़ेगा, बट इन केस नहीं हो पाता है, देन यू हैव टू सी द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होगा इसका? सिंपल फ्लैट. ओके, फर्स्ट कीवर्ड इज स्क्वेमस एपिथेलियम tissue is a simple flat, thin and flat and delicate lining. ये कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनको आप सिर्फ निकालोगे तो आप उस पॉइंट को कवर कर सकते हो. देन प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, alveoli, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. इतना आपने लिख लिया. देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ to cover the types of the cell. तो ये अगर आपने सिर्फ keywords इसके निकाले हैं तो आपको उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे. Then stratified squamous epithelium are arranged in a pattern of layers. तो आपने इसको लिखना है pattern of layers and then example. तो आपने example जो भी decide किया होगा आप वो लिख सकते हो. Then next is columnar epithelium. Columnar epithelium cells are present where absorption and secretion occur in the inner lining of the intestine. So you can write it कि it is present in the absorption and the secretion part of the intestine. It is pillar-like epithelial barrier present in respiratory tract. Epithelial tissue has hair-like projection called cilia and it pushes the mucus forward and clear it. बहुत easily तुम इसको लिख सकते हो अगर तुमने ये सीख लिया कि तुम्हें आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है. सेम ऐसे ही आपने क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर को करना है. ठीक है. सो दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन. In class 10, yes, in class 10th, you will get 5 marks question of all the 3 subjects each. 1 mark question, 1 question of physics, 1 question of chemistry, and 1 question of biology. Let's move on to the 30th question. We have a 30th question here. Describe the microscopic structure of cell. Here, this answer is of describing. Here you have to describe. And here you will get answer in 1 line. But that is just a support. ये आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है कि आपने आंसर में क्या कंटेंट अलाउ करना है और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू बी बाय योर ओन. So influenza is an airborne disease, so it be prevented by keeping away from the patient. This is the 30th question. I think this question is changed. Let's see. And we had seen the question number 30. Oh, sorry. By mistake, I had seen the different question. 30th question is how can we prevent influenza? So that is the answer of 30th question कि हम influenza जैसी disease से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. So this is the answer. It is an airborne disease, so it is prevented by keeping away from the patient. आप इसमें one more point you can add. It is a communicable disease. And the communicable is transferring of viruses from one body to the other body. ये आप इसमें ऐड कर सकते हो. You have assertion reason here. In I have to see the question first. तब बताऊंगी मैं आपको. assertion reason में मैक्सिमम 90% केसेस में assertion reason बहुत लोगों का रॉन्ग होता है.
तो रॉन्ग होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि assertion और रीजन एक दूसरे से मिलता जुलता होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि assertion में जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। See, 15th question. ठीक है, 15th question is related to bio. अब आपके सामने दिया है assertion, we need to be happy in order to be truly healthy. Okay, so this is the assertion, and the reason is social equality and harmony are necessary for the individual health. Ab you have option, and that is both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. A is true, but R is false, and A is false, but R is true. Now tell me, anyone can reply in chat ki what will be the correct option after watching assertion and reason. आपके हिसाब से क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? अभी चेक कर लेते हैं कि कितने लोगों का सही हो सकता है। शीतल खुशी is saying option B. कृषिका गौरव is saying option A. फिर से एक बार पढ़ लो। We need to be happy in order to be truly healthy. Social equality and harmony are necessary for the individual health. और भी किसी ने आंसर देना है, मोस्ट वेलकम। ओके, मेजॉरिटी बी की तरफ जा रही है। अब एक चीज इसमें गुड थिंग ये है कि आपको अगर आपका आंसर सही है देन इट इज गुड, और अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। ठीक है, तो हम इसको हम देखते हैं। 15th का आंसर देखना है हमने। The correct option is D. ठीक, अब जितनों ने मुझे बी और ए ऑप्शन दिया था उनका ऑप्शन रॉन्ग है, एंड द ऑप्शन इज डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब उसने एक्सप्लेन किया अपने आप को। सॉरी, दिस इज 14th क्वेश्चन। सॉरी, दिस इज 15th। सॉरी। सो जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया था they are correct. Both A and R is true, and R is the correct explanation of assertion. तो इसमें कुछ explanation की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही true है। तो जिसने भी A ऑप्शन दिया था they are fully correct, और लेकिन मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ B ऑप्शन दिया था। कृषिका is saying A, and बाकी सब ने मुझे बी ऑप्शन दिया था। एंड गौरव ने ऑप्शन मुझे ए दिया था। अच्छा, अब हम इसके बाद फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी तुमने आंसर देख लिया है सेकंड पार्ट का। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका रीजन हम देखेंगे, पहले उसके पहले हम इसका पार्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more system of the body will change. Assertion जो बोल रहा है कि अगर आपको कोई डिजीज हो गया है then the functioning भी बॉडी का चेंज हो जाता है, and the appearance also. आपको फीवर है तो आप बहुत हेल्दी लगोगे चेहरे से, ऐसे जरूरी नहीं है।
And the reason is, sign of diseases are the things we feel as being wrong, like headache, cough or loose motion. तो already I had shown you the answer. No शीतल, तुमने नहीं देखा होगा, बाकी मैक्सिमम लोगों ने आंसर देख लिया था. So the answer is C. A is true but R is false. अब इसमें आपको क्या बोल रहा है? Signs of the diseases are things we feel. हम फील करते हैं as being wrong, like headache, cough, loose motion. ये ऐसी चीजें हैं जो आपको फील करने नहीं देती हैं, ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होती है. तो ये पॉइंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है. अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप फील करोगे कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी. आपको खांसी आ रहा, आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाओगे. तो दे डोंट फील यू, they change the functioning of the body. So assertion is correct and the reason is false. ये इसका correct answer था. So अगर ये question किसी को आता है, then he or she can give the answer. Name the enzyme present in tears which prevents eye infection. ये भी मैंने तुमको पढ़ाया है, लेकिन नहीं पता लोगों को याद है कि नहीं. Name the enzymes present in tears which prevents eye infections. Anyone? Okay. Showing you the answer. लाइसोजाइम, ये आई इन्फेक्शन, और यही रीजन है, यस तन्मय, लाइसोजाइम, और यही रीजन है कि हमारी आंखों से जब आंसू आता है, जब हम रोते हैं, तो हमारे आई का जितना भी इन्फेक्शन है वो सारा कुछ धुल कर गिर कर निकल जाता है. ठीक है. सो and this is the question related to the RBC. When a RBC is kept in a concentration saline solution, it loses water and leads plasmolysis in the RBC. So students, these are some of the questions जिसने मतलब जिसको ये questions के answers आपको अपनी कॉपी में लिखकर मुझे सबमिट करना है. जितना फास्ट आप लिख सकते हो, आप उतना फास्ट सबमिट कर सकते हो. ठीक है. आई एम शोइंग यू स्लोली. Go in portal, see the recorded video and then write the question. And if you want to count the number of questions of biology, that's also I am telling you. You can write the number. 35 number biology का question है. 32 is biology question. 30 again. This question 24, we can discuss this question also. 24, 23 is biology question. Naveen was suffering from respiratory disorder since long time. His daughter Sarika took him to a doctor. After studying his case, the doctor came to know that Naveen was residing near a very busy road. What could be the possible reason for Naveen's respiratory disorder? Anyone? किसी को इसका आंसर देना है, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊंगी. According to the situation. Yes, Sheetal. Yes, Sheetal. Ma'am, pollution. Yes, pollution. Harit, very good. Pollution. But you have to elaborate little bit. Pollution को explain करना है. Only one word you will write, then you will get half marks. Which major pollutant are present in exhaust of vehicles? Pollutant का आपको नाम बताना है. तो ऐसा कोई pollutant जानते हो जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, या जो हमारे व्हीकल से आपने देखा होगा काला काला धुआं निकलता है, तो ऐसा कोई pollutant? Anyone?
and write the preventive measures that should be taken. Any preventive measure? किसी को? शीतल? Ma'am, mask. हाँ, sorry. Repeat again. Wearing mask. Wearing mask. Okay. Is it possible to wear mask every time? Okay. Now just see the question number 24th answer. What this sample paper is telling to you. These are the gases which comes from the smoke of the chimney, which comes from the smoke of a vehicle. ये जो काला काला धुआं निकलता है, this monoxides, dioxides and nitrogen oxides. Use of fuel that burns completely regularly. PUC checking अभी आपको पता है जगह जगह पे गाड़ियों की checking होती है, pollution under control to be checked of all the vehicles. So these are the some preventive measures. So 24 and 23rd question is of biology. Yes, then it's not, it does, don't write the questions of objectives, leave it. ठीक है, objectives को छोड़कर I'm just asking for the 1 mark question where you have to write only one word or one statement. See, one more question. I think this is of okay. This is unseen passage. You have to read the passage and give the answer. This you have to write in copy. And I think the upper part is only of objectives. Yes, all the questions are of objectives. This question number 12. Name the enzyme present in the tears which prevents eye infection. अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया. शीतल. Ma'am, which question number is that unseen passage? Okay. This is question number 7. No, sorry, not question number 17. This is question number 18. Yes, question number 18. Question number 12. Question number 9. 7. 6. 4. You leave question number 3rd. Don't write question number 3rd. Till 4th question. So the number of questions you know. No, PDF I will not upload in the portal. You will see the recorded video. In that I had shown every question and the answers also. तो आपने ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को पूरा लिखना है. No shortcuts. 11 questions. Okay, Sheetal. 11 questions are there. Students, this much is from my side. Okay, now the time is over.